Okay guys, let's begin with the doubt solving of exercise 2b, the homework which I gave you. Just 6 questions. You have any doubts in the 6 questions? Anyone out of the 6 questions? Prajakta, did you find your doubt? No, sir. What are you saying? Prajakta, when you solve a question, who other than you is best one for finding the doubt? Prajakta, Yes, sir. see this last step. I'm going to show you now. What is the interest for the. Okay, wait. What was the question? If the interest for the second year exceeds that for the first year. Oh, okay. Let me check. Interest for the second year. Interest for the second year is 54x by 625. So 54x by 625 minus 2x by 25. Is 2x by 25 the interest for the first year? Oh, okay. Yes, sir. And that is equal to 96, right? Let me just. Okay, so this will be the LCM you have taken is correct, 625. So 54x minus 50x by 625, that is 4x by 625, which is equal to 96. So what have you done? What have you done here? You have to equate this 96 with 4x upon 625. Prajakta, Yes, sir. did you understand? I didn't understand the last step. No, you did not understand. Wait, look here. See, they have given you that I2 minus I1 is 96 and your I2 minus I1 is 4x by 625 is equal to 96. So x is equal to 96 minus 625. Sorry, 96 times 625 upon 4. Okay, now divide it. Is 96 divisible by 4? If not, then just Yes, sir. It's divide. 24. Sure? Yes, sir. Yes, it is 24. Multiply 24 times 6, the 625, and you will get your x, and your x is the original principal. Sir, it's 15,000. Is it coming now? Did you check? Yes, sir. So, what did you do? Sir, I also multiplied 100. Why? And I just took the reciprocal of it. Why? You simply had to equate 96 and 4x upon 625. You simply had to equate it. Are you understanding? Yes, sir. Yeah. Okay, guys. Chalo. So, Yes. have you also give the 10th question as homework? What? Because I have done. Oh. Sorry. So I have done question number 1, 3, 4, 7, 8, and 9. I have not done the 10th one. The I told you this last time. The 10th one in my book is 9th one in your book. Is the same thing, okay? Oh, okay, sir. Yeah. Any doubt, guys? Please on your cam, everyone. Prajakta, Om, Krish, Dhani, Ananya.
Do you have any doubts in these questions? No, sir. No, sir, no doubts. Okay, great. So we are ready to go ahead, right? Okay, before we go ahead, I would like to give you some insights about compound interest. Okay, so please note it down. इसको लिख लो प्लीज, जो भी मैं insights दे रहा हूँ इसको लिख लो. Number 1, compound interest for first year is equal to simple interest for first year. फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा इक्वल होता है. उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहता है और सिंपल इंटरेस्ट उतना ही रहता है. ठीक है, फर्स्ट ईयर का और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होते हैं, बट उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम. सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर is always the same. Simple interest for each year is always the same. हर साल का सिंपल इंटरेस्ट उतना ही होता है, लेकिन हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही होता है क्या? नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ. कंपाउंड इंटरेस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग ईच ईयर. कंपाउंड इंटरेस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग ईच ईयर. सिंपल इंटरेस्ट उतना ही रहता है. Number 4, the difference, this is very important. okay, ये मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगा. द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट्स of any two consecutive years, the difference between compound interests or amounts of any two consecutive years is also an interest, is also an interest on the compound interest or amount of the preceding year. The difference between compound interest or amounts of any two consecutive years is also an interest on the compound interest or amount on the preceding year. This sounds really confusing. Difference between compound interest or amount is an interest on the preceding year, on the compound interest or amount of the preceding year. ये हम लोग क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे ना, तब ये वाली प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी में बताऊंगा. रिमेंबर फोर्थ प्रॉपर्टी, फिर मैं बताऊंगा. याद रखना ये स्टेटमेंट को और लिख लो पहले तो इसको. ठीक है, और एक है, और एक. यस Sir, I had a doubt that the school, when we came in fifth, the school told that you have to write with gel pen, and they told that gel pen is smoother than ball pen, so you should use gel pen only. But in 10th we need ball pen, right? Instead of ball in pen, board, we cannot use anything. in board So what exams we na. can do? Yes, sir. Yeah, I think there is, this is a new rule, because when I gave my board exams in the year 1999, I passed my board 10th boards in 1999. So that time there was no such rule. I wrote all my exams, I remember, with gel pen, add gel pen. You know, add gel.
नहीं, अभी नहीं आता वो ब्रांड, पता नहीं, मैंने तो वही यूज़ किया है, एड जेल. तो दैट टाइम देर वॉज नो सच रूल, बट नाउ दे हैव गॉट दिस रूल बिकॉज क्या होता है, जेल पेन अगर इट इज़ वाटर सोल्यूबल, सो Yes, sir. अगर उस पर पानी गिर गया ना, सो इट गेट्स इरेज्ड, सो पूरा तुम्हारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा. सो गलती से भी ऐसे एक्सीडेंट ना So, हो, sir, what is better then? then whatever instructions they are giving you, just follow that. Because there are some gel pens available which are water resistant, I believe. Now they are available in the market. You can use those. You can use Okay, sir. water resistant gel pens. ठीक है, उसको जेल नहीं बोलते, उसको कुछ और ही बोलते हैं, बट इट फील्स लाइक जेल पेन. सो जस्ट रिसर्च के ऐसी पेन्स को क्या बोलते हैं. Okay, sir. Thank you, sir. ऑलराइट, ठीक है, ये फोर्थ रूल सबने लिख लिया. अनन्या प्लीज ऑन योर कैम. और एक रूल है, फिफ्थ रूल. If simple interest for x if simple interest on a certain principal for n years is equal to rupees x. अगर कुछ साल के लिए, n years के लिए, एक सर्टन प्रिंसिपल के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट अगर रुपीज x है, देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल for 1 year is equal to x divided by n. मतलब अगर मुझे कुछ years के लिए सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू लेट से ₹400 फॉर 2 years मुझे दिया है, ठीक है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया है 2 साल का 400. तो therefore I can find the simple interest for 1 year. कैसे करूँगा? टोटल सिंपल इंटरेस्ट लूँगा, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा मुझे? 200. सो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 400 है, तो हर साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 हो जाएगा, ठीक है. सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल एवरी ईयर, इसकी वजह से. Please note it down. These are the only properties, or you can say the characteristics of simple and compound interest, which are applicable in the next part. बाकी जो formula हमने पढ़ा है, method पढ़ी है, it's going to be the same. Only thing, few things are important while solving some complicated problems. So let's do some complicated problems and then you'll understand okay, how is the chapter proceeding ahead. Okay, so this is the beginning of the final part, the last part of the chapter. Okay.
Okay, so the first question is, a sum of money is invested at compound interest payable annually. The amounts of interest in two successive years are 2700 and 2800. Find the rate of interest. Remember property number 4. प्रॉपर्टी नंबर 4 को याद रखो. प्रॉपर्टी नंबर 4 तुम्हें वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करनी है, लेकिन उसकी टेक्निक को समझना है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द टेक्निक. सबसे पहले they are saying that a sum of money is invested. What do you mean by a sum of money? Sum of money होता क्या है? Principal. Very good, principal. Do you know the principal? Have they given you the principal? Have they given you the principal in the question? No, so that is question mark. पहले ही लिख लो. The best way to solve the problems from these chapters are to understand the techniques. The technique is to read the question, break it up into small parts and just note down what is given and what has to be found out. पहले तो ये करना सीखो. ठीक है, प्रिंसिपल नहीं दिया है. अच्छा, यहाँ पे ये भी हिंट दिया है कि इट इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, पेएबल एन्युअली. At compound interest payable annually. The amounts of interest in two successive years are 2700 and 2800. Who can tell me what is 2700 and 2800? They are the interest for the first and second year. Very good. They are the interests for Maybe amount. nth year. No, they are not amounts. This is where most of the children they make mistakes. यहाँ पे अमाउंट वर्ड देख के सबको लगता है ये अमाउंट है, लेकिन आगे भी तो पढ़ो. आगे क्या बोला है? अमाउंट्स ऑफ इंटरेस्ट. अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये इंटरेस्ट है. ठीक है, दिस मे बी द इंटरेस्ट फॉर द nth ईयर एंड दिस मे बी द इंटरेस्ट फॉर द n+1th ईयर. Krish said that this is interest for the first year and this is for the second year. No problem. If you consider 2700 to be the interest for the first year and 2800 to be the interest for the second year, कोई problem नहीं है, चलेगा. लेकिन ये हमें बोला नहीं है. They have not said that this is the interest for the first year and this is the interest for the second year. They have said these are the interest for two successive years. Can anyone tell me successive का मतलब क्या है? One after the another. Exactly, one after the another. Consecutive बोलते ना जिसको, याद रखो इसको. Consecutive या फिर successive का मतलब होता है one after the other और वन आफ्टर अनदर. एक के बाद एक जो आता है उसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव या फिर सक्सेसिव. ठीक है, ये याद रखना. ये बहुत लोग पता ही नहीं होता सक्सेसिव का मतलब क्या है, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे. सो दे हैव सेड क्रिश कि दीज आर द इंटरेस्ट फॉर टू कंजिक्यूटिव ईयर्स. नाउ क्रिश, इज इट इंपॉर्टेंट दैट आई टेक इट एज इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर और इट इज नॉट important? It's not important, right? It can be second and third year also. It can be fourth and fifth year also. It can be 10th and 11th year also. किसी भी 2 साल के consecutive years के interests हमको पता है, और हमें ढूंढना क्या है? What we have to find? What we have to find? Rate of interest. Rate of interest. We have to find the rate. तो rate पे भी question mark डाल दो. ठीक है. अच्छा, ये जो इंटरेस्ट है, कैन यू टेल मी, आर दे कंपाउंड इंटरेस्ट और आर दे सिंपल इंटरेस्ट? They are compounded. वेरी गुड, बिकॉज द सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट. तो दीज इंटरेस्ट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट. ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है. ठीक है, ओके. चलो, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट
for the nth year is rupees 2700 and compound interest for the n plus 1th year is rupees 2800. तुम 1 और 2 लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे प्रिंसिपल नहीं दिया है और बोला है रेट कितना है वो बताओ, तो have they asked you to find the principal? Have they asked you to find the principal in the question? No, right? So this thing principal ये तुम नहीं भी ढूंढोगे तो चलेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट ढूंढ भी सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन फाइंड इट, इफ़ यू डोंट वांट इट्स ओके, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली फाइंड द रेट। सो वी विल नॉट फाइंड प्रिंसिपल इन दिस क्वेश्चन, वी विल फाइंड द रेट डायरेक्टली। अब मैं फिर से तुम सबसे पूछते, यस प्लीज। Sir, we also have the time, right? We just know this Because it's compound interest. So 2 successive years. We just know that there are 2 successive years, nothing we else. calculate in first year and second year. No, it can be 4th year and 5th year, it can be 10th year and 11th year, it can be anything. Rate will always be same. ये लोग जो रेट पूछ रहे हैं ना, that will not change for any year, the rate will be same, right? So that's what is there is, they've not asked the time, they've not asked the time, they've not given the time, and they've not asked the principal, so we just have to find the rate. Okay, now just remember what I told you in point number 4. point number 4 पे मैंने क्या बताया था, देखो मैंने बोला था कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, दिख रहा है तुम्हें, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है, इट इज द इंटरेस्ट, इट इज द इंटरेस्ट ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। कुछ समझ में आया? 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को हम लोग इंटरेस्ट मान सकते हैं, किस पे, जब तुम्हारा प्रिंसिपल प्रीसीडिंग ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ले लोगे तब, ठीक है। सो ये पॉइंट नंबर 4 को अभी भी तुम्हारे माइंड में क्लियर नहीं है, आई एम श्योर, मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा और ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लीज यहाँ ध्यान से देखो, प्लीज वॉच केयरफुली, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू से, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा मैं, ठीक है। डिफरेंस ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 consecutive years is equal to 2800 minus 2700। कितना आया डिफरेंस? 100 आया डिफरेंस, 100, ठीक है, डिफरेंस 100 आया। अब देखो, लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू, अब मैं प्रिंसिपल किसको ले लूंगा पता है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर मतलब पहले वाला, मतलब फर्स्ट ईयर या जो पहले वाला ईयर है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा मेरा नया प्रिंसिपल, ठीक है, 2700, और इंटरेस्ट में मैं ले लूंगा ₹100। कौन है इंटरेस्ट? ये जो डिफरेंस ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट बिटवीन 2 ईयर्स है वो होगा तुम्हारा इंटरेस्ट, और रेट, ठीक है, रेट। अब नाउ सी, रेट इज टू बी फाउंड आउट, जो तुम्हें यहां से मिलेगा। टाइम, ये दोनों ईयर्स के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, कौन बता सकता है? 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के बीच में कितना? यस एग्जैक्टली, द टाइम बिकम्स 1 ईयर। So now you have got all the ingredients which are required in the formula but one, which is R. So we can find it. So I is equal to PRT upon 100. I कितना है? 100. P कितना है? 2700. R कितना है? नहीं पता. T कितना है? 1 upon 100. 2 0 कट. So rate कितना हो जाएगा? Therefore rate is equal to 100 by 27. Can you please
find it in mixed fraction at least? So, Yeah. so second number, which is 2880, you have noted as only 2800. Oh, is it 2880? Yes, sir. Okay, so that mistake is over here, right? Can I change it? 1 second, I will change it right away. Okay, thank you so much for saying that. 2880. Let me make the changes. 2880. The difference also will change. यहाँ पे चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज हो जाएगा. ठीक है? So let me change it. So this will be 2880 minus 2700 rupees 180. यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा rupees 180. तो 180 is equal to P, which is 2700 into rate, which is R, time, which is 100 as it is रहेगा. ठीक है? So rate is equal to 180 divided by 27. So 9 3s are 9 20s are. So that is 6 2 by 3%. 6 2 by 3%. Yes, now we are getting the correct answer. Directly we got the rate 6 2 by 3%. Please note it down and ask me. Ask me regarding if you have any doubts regarding this. Sir, what if we take the 80 below, 180 below itself? What if it shifts 180 to the right? Sorry? If here we shift 180 to the right side instead of 27 shifting to the left side. Then we have to shift R to the left side. So after that also It's the same thing, right? misunderstood. So we can Misunderstood. shift, yeah. We can let R be here, shift 127 to the other side and solve it. Okay, so we got one variable on the one side and the cardinal numbers on the other side. Exactly. Okay, but did you understand the concept behind this question? That we had no idea regarding the principal. Principal तो मुझे पता ही नहीं था. मुझे सिर्फ 2 consecutive years के compound interest पता था और मुझे रेट पूछा था. तो मैंने क्या किया, दोनों consecutive years के compound interest का डिफरेंस निकाला. ये जो डिफरेंस था वो मेरा नया इंटरेस्ट बन गया और प्रीसीडिंग ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने प्रिंसिपल बना दिया और टाइम को 1 ईयर ले लिया और मैंने रेट ढूंढ लिया. सो द रेट, Take the principal as the how do you take the preceding compound interest as the principal? yeah, that's what we wrote it in that part. The difference between the compound interest of any 2 consecutive years is also an interest on the compound interest of the preceding year. That is the property of compound interest. Preceding year का जो compound interest है, अगर उसको principal मान लूँ मैं, तो उसके ऊपर जो interest आता है, that is equal to the difference between the interest of 2 consecutive years, 2 consecutive compound interest or compound interest of 2 consecutive years. The difference between the compound interest of 2 consecutive years is the interest when you take the principal as the previous year's compound interest and time as 1 year. That is what is meaning of this thing, the fourth property. Okay, so these kind of questions can be solved only using this technique, and these kind of questions can only be solved without formula. You cannot find these questions in the third chapter.
थर्ड चैप्टर में ऐसे कोई क्वेश्चन है ही नहीं. They are all different questions. Here these kind of questions will be asked, and that is the main difference between second and third chapter. Some of the questions can be done only without formula, some of the questions can be done only with formula, and some of the questions can be done with both the methods, with and without formula. So you have to identify. Still without formula. These are all without formula, and these are the questions which can be done only without formula. Okay, you cannot solve this question, you cannot solve this question with formula. Remember, this question is not possible to be solved with the help of formula. That is the third chapter's method. This can be solved only without formula. Okay? Okay, sir. Chalo, next. A certain sum of money placed out at compound interest amounts to rupees 6272 in 2 years. This is the amount in 2 years. Okay, and certain sum of money. Ohm, what is the principal? It is not given. Do you have to find the principal? Maybe, yeah, maybe you have to find. But is it given? Is the principal given? No, sir. No, it is not given. Okay, placed out at compound interest amounts to rupees 6272. Mahant, what is 6272? No. Read the question properly. A certain sum of money placed out at compound interest amounts to rupees 6272. What is this amounts to? A sum of money amounts to rupees 6272. A sum of money, a certain sum of money amounts to rupees 6272. एक मनी मतलब एक प्रिंसिपल का अमाउंट बन जाता है. सो व्हाट इज दिस 6272? अमाउंट फॉर विच ईयर? For the second year. Okay, amount after 2 years or amount for the second year. Okay, so the first thing which has been given to us, or the first thing which we have to find maybe, is the principal, because principal is not given to us, but the amount of the second year is given to us. Is how much? 6272. Okay, 6272 is the amount after 2 years. Okay, and to rupees 7024.64 in 3 years. Dhani, what is this 7024.64 in 3 years? रेट 7,000 रुपये रेट कैसे हो जाएगा यार? तुमने होमवर्क किया था क्या इसके पहले वाला? क्योंकि उसके बिना तो फिर यहाँ रेट ही दिखेगा ये. यस प्राजक्ता, I didn't hear you. Can you repeat again? Prajakta, can you repeat yourself? Ananya? Ananya? Yes, sir. Ananya, what is this 7024.64? Sir, is it the difference between the amount? No. Please read the question na again. Read the question again if you are not able to understand. What they are saying, a certain sum of money placed out at compound interest amounts to rupees 6272 in 2 years and rupees 7024.64 in 3 years. What they are saying? What is 7024.64? In how many years? Yeah, exactly. So amount in 3 years or amount of the third year is 7024.64.
फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल, तुम्हें दोनों ढूंढना है. तो वी आर गोइंग टू यूज द सेम टेक्निक विच वी यूज इन द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज टेक्निक नंबर 4, पॉइंट नंबर 4. महंत, व्हाट वाज पॉइंट नंबर 4? क्या करना क्या है इसमें, कैसे निकालना है? पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा. या बट देर इज नो वेट, देर इज नो कंपाउंड इंटरेस्ट हियर. ठीक है, तो अगर तुम वो पॉइंट नंबर 4 फिर से पढ़ोगे तो आई हैड क्लियरली मेंशन्ड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स. मतलब तुम क्या कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी डिफरेंस निकाल सकते हो और कंसेक्यूटिव ईयर्स के अमाउंट का भी डिफरेंस निकाल सकते हो, एंड दैट बिकम्स द इंटरेस्ट. सॉरी, इज माई वॉइस ब्रेकिंग? No, your network might be weak. Okay, the difference between amounts for 2 consecutive years is also an interest on the amount of the preceding year. तो ये जो सेम चीज हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई की है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, द सेम थिंग आई कैन अप्लाई ऑन अमाउंट्स ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड द डिफरेंस between A2 and A3. ठीक है, which is equal to A3 minus A2, which is equal to 7024.64 minus 6272. Can anyone tell me this? Yes, sir. So the answer is 752.64. 752.64. Is it correct? Yes, sir. Okay, so this is the difference between the amounts of 2 consecutive years, A2 and A3. Now this will be the interest. ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ 2 consecutive years, दैट इज रुपीज 752.64 विल बी द इंटरेस्ट. अच्छा, प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल विल बी द अमाउंट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, पहले वाली ईयर की जो अमाउंट है वो हो जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल. ठीक है, सो प्रिंसिपल विल बी रुपीज 6272. ठीक है, रेट क्या बन जाएगा? नहीं पता है रेट क्या है. ठीक है, और टाइम क्या हो जाएगा? 1 ईयर. सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड द इंटरेस्ट, द रेट. सो आई इज इक्वल टू PRT upon 100. So I is 752.64 is equal to 6272 times rate we don't know times time is 1 year upon 100. ठीक है, which is 752.64 times 100 upon 6272 is equal to the rate. Please find the rate. Then I will tell you how to find the principal. But first find the rate. Sir, I got it. Yes, how much is it? Sir, it's 12%. 12%. Can anyone confirm please? Yes, sir, it's 12%. Very good. Okay, so now we have to find the principal. Okay, अब प्रिंसिपल ढूंढने का जो मेथड है प्लीज इसको ध्यान में रखो.
So let the principal be रुपीज एक्स. प्रिंसिपल को क्या लेना है तुम्हें? एक्स. ठीक है. और फिर कैलकुलेशन करना है फॉर फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर के लिए P1 कितना हो जाएगा? रुपीज एक्स. R1 कितना हो जाएगा? 12%. T1 कितना हो जाएगा? 1 ईयर. ठीक है. कैन यू फाइंड I1 which is P1 R1 T1 upon 100? Please find I1. Then please find A1 which is P1 plus I1. Find these two things first in terms of x. दोनों in terms of x मिलेगा तुम्हें. Please find it. Sir, I found out. Yes, please. I1. Sir, it is 3x by 25. Can anyone Yes, even I got it the same. 3x by 25. Very good. P1 plus I1. A1. Sir, it is 28x by 25. 28x by 25. Very nice. Okay. Now for the second year, you have to continue this process for the second year, where P2 will be equal to A1, which is 28x by 25. R2 will be equal to 12%. T2 will be equal to 1 year. Please find I2, okay, and find A2. Dressed as 84x by 60. Yeah, I2 is how much? 84x by 65. Okay, can anyone confirm, please? Yes, sir, it's correct. And A2? Sir, it's 784x by 625. Please confirm someone. Sir, I am getting 17,580x by 625. How much? 17,584. No, that's unusually high. Can anybody else confirm the answer of A2? I2 and A2. महंत, तुमको आया आंसर? Oh, sir. Sir, 700 upon 625. 700. 784 नहीं है, 700 आ रहा है तुमको. No, sir. After multiplying 28 by 25, we get 700. We also have to add 84x. Exactly, because A2 is I2 plus P2. Come on guys, it's a simple thing. इस रेट से करेंगे The तो answer is 780.
यस, इस रेट से करेंगे तो 2 क्वेश्चन होंगे पूरे क्लास में. I thought as much. Yeah, even Siri agrees with me. Okay guys, तो अमाउंट टू तुम्हें x के टर्म्स में आया है. अब तुम बोलोगे ये पूरा प्रोसेस क्यों किया हमने वापस? दिस एक्स्ट्रा प्रोसेस हैड टू बी डन इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रिंसिपल. यू रिमेंबर प्रिंसिपल भी मिसिंग है एंड दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द प्रिंसिपल. फाइंड द सम ऑफ मनी. यहाँ पे देखो लिखा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम ऑफ मनी. रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल गया ना हमें 12%, हमारे वो डिफरेंस वाले मेथड से. बट हाउ टू फाइंड द सम ऑफ मनी? अच्छा, नाउ व्हाट आई डिड, रेट ढूंढा मैंने, उसके बाद x ले लिया प्रिंसिपल एंड देन आई टोल्ड यू के फाइंड द अमाउंट टू. मतलब फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन, सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन एंड फाइनली वी वेंट ऑन टू फाइंड अमाउंट टू. ठीक है, अमाउंट टू हम लोग ढूंढ रहे थे. अच्छा, अमाउंट टू तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है. सी, दे हैव ऑलरेडी गिवन अस अमाउंट टू. डू यू सी ओवर हियर हाउ मच इज अमाउंट टू? अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर 6272. So whatever amount 2 we have got, we just have to equate it with 6272. ठीक है, so therefore 784x upon 625 is equal to 6272. So we will get x, that is our principal, that is 6272 times 625 upon 784. Please calculate. Ananya Prajakta Dhani, please keep your cam on. Come on, find the value of x, that is a principal. Sir, 5,000. It is correct. So x is equal to rupees 5,000, which is our principal. Yes, sir. Even I got the same. Yes. Okay, so the principal is rupees 5,000. Now I hope that all of you understood the method, the technique which I was talking about. रेट ढूंढने के लिए अगर तुम्हें 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट दिए हैं तो उनका डिफरेंस निकाल लो. वो डिफरेंस इंटरेस्ट बन जाएगा और प्रिंसिपल प्रीवियस ईयर की अमाउंट या प्रीवियस ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा. और टाइम 1 ईयर ले लो, रेट मिल जाएगा PRT अपॉन 100 से. और प्रिंसिपल अगर ढूंढना है तो प्रिंसिपल को x लेके फिर वो पूरी मेथड करनी पड़ेगी टू फाइंड योर रिक्वायर्ड अर्लीस्ट अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द प्रिंसिपल एज वेल. ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं ऐसे तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा. एक चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, इन द क्वेश्चंस आस्किंग अस टू फाइंड द सम और डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल ईयर्स और द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन of an individual year, we must use the method of compound interest without formula. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बोलते हैं कि थर्ड ईयर का अमाउंट बताओ, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ. इसके लिए हम लोग कौन सी मेथड यूज करते हैं? विदाउट फॉर्मूला वाली. ठीक है, विदाउट फॉर्मूला बहुत काम की चीज़ है. मतलब ये जो हम कर रहे हैं अभी सेकेंड चैप्टर, इफ़ यू थिंक के विथ फॉर्मूला से तो ईजी हो जाता है, फिर क्यों विदाउट फॉर्मूला करना है? कुछ क्वेश्चंस विदाउट फॉर्मूला ही सॉल्व होते हैं और कुछ क्वेश्चंस विथ फॉर्मूला सॉल्व होते हैं और कुछ क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व होते हैं. तो यू हैव टू सिलेक्ट वेरी माइंडफुली कि तुम्हें कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है. यू कैनॉट रैंडमली चूज के नहीं मैं तो विथ फॉर्मूला ही करूंगा क्योंकि वो ईजी है. नहीं, यू कैनॉट डिसाइड दैट. इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में क्या करना है. चलो लेट्स. यस Sir, actually our teacher told us that in exam they can ask you with the formula also in the questions. Like Yes. they will give you bracket and they will ask you. True. Also they will tell you that
So there are, I told you, there are certain questions which can be solved by both the methods, right? In those questions, they might mention that use the formula or do without formula. तो दोनों के लिए तुम्हें रेडी रहना है. मेरा भी यही कहने का मतलब है कि व्हेन आई से दैट सम क्वेश्चंस कैन बी डन विद बोथ द मेथड्स, यू हैव टू बी रेडी विथ एनी मेथड. ऐसा नहीं है कि मुझे एक ही मेथड आता है तो मैं वो नहीं करूँगा. तुम्हें दोनों चैप्टर्स को इक्वल अटेंशन देना है, विथ फॉर्मूला भी विदाउट फॉर्मूला भी. ठीक है, बिकॉज दे कैन आस्क सेपरेटली इन एग्जाम. तब क्या करोगे तुम अगर एक टेक्निक नहीं आएगी तो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 फॉर 3 years. अनन्या, टेल मी व्हाट इज दिस 10,000? Sir, it's principal. वेरी गुड. तो प्रिंसिपल इज ₹10,000. ठीक है, फॉर 3 years. ये टोटल टाइम है. टोटल टाइम को मैं यहाँ पे लिखता हूँ T. 3 years. एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली. मतलब रेट नहीं पता है. At the end of 1 year, the sum amounts to ₹11,200. Ananya, what is this? Yes, sir. What is this? 3 years. At the end of 1 year, this sum amounts to ₹11,200. Sir, it is amount. Which amount? It is A1, amount after first year, 11,200. Okay. Calculate the rate of interest per annum. Okay. Amount at the end of second year, A2. ठीक है. And amount at the end of third year. Right? तो पहले तो तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना तो बहुत इजी है. यहाँ पे क्या करोगे तुम? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आसानी से निकल जाएगा. First we will find the interest. Exactly, but how? So, A1 minus P. That is very easy. Yeah. We'll first minus A1 So we will do the calculation for the first year. for the first year. Yes. Exactly, we will you do the calculation for the first year, जिसमें P1 is ₹10,000 and A1 is 11,200. Therefore, I1 will become A1 minus P1. Right? Formula सही है ना interest का? Which is 11,200 minus 10,000. Which is ₹1,200. That is the interest for the first year. Now we'll use the formula of I1, which is P1 R1 T1 upon 100. I1 का formula use करेंगे. तो I1 is ₹1,200. P1 is 10,000. Rate I don't know. Time is 1 year. So we can find the rate. Please find it. Come on guys, get the rate. But the rate is 12%. 12%. The 12. Yes, sir, it's 12%. Rate is 12%. ग्रेट. चलो रेट तो मिल गया तुमको, तो पहली चीज मिल गई. अब तुम्हें पूछा है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. तो तुम क्या करोगे? यही कैलकुलेशन को तुम आगे लेके जाओगे. मतलब फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में क्या करोगे? P2 Convert A1 to P2. exactly, sorry, P2 will be equal to A1. P2 will be equal to A1, which is 11,200. ठीक है. R2 rate for the second year will be 12%. T2 will be equal to 1 year. I2 you will find and A2 you will find. And on the similar notes for third year you have to find A3 in the similar manner. Please do it. You have to do it now. Come on. Okay. Sure. So what did we find in this question? We found the compound interest for the second year. We found the compound interest for the second year. But what we have to find? We have to find the rate percent. Tell me, how do we find the rate percent? It's very easy now.
See, we have got the compound interest for the second year. We have got the compound interest for the first year. We have got the compound interest for the first 2 years, consecutive years. These are 2 consecutive years. It's a difference between two consecutive. Exactly, you are perfectly right. So, CI2 minus CI1 is equal to 210 minus 200, which is rupees 10. Now, rupees 10 becomes the interest on the principal, which is the previous or preceding compound interest, which is rupees 200. The rate is unknown and the time becomes 1 year. So, we can use the formula I is equal to P R T upon 100. 10 is equal to 200 times R times 1 upon 100. We can find R, and if you solve this, 2 goes that side and R becomes equal to 5%. Did you understand? So here we used some more properties of simple and compound interest. The first property which we used is, अगर 3 साल का compound simple interest दिया है तो 1 year का simple interest will be total simple interest divided by 3, right? Then second property we used is simple interest and compound interest for the first year is always the same. And then the third thing which we used is the difference of 2 consecutive years. The difference of compound interest for 2 consecutive years becomes the interest for the on the preceding year's compound interest, right? ठीक है guys, everyone okay with this question? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's go ahead. We have some more time left. Let's see how many we can do. 18th question. The compound interest calculated yearly on 10%, at 10% on a certain sum of money amounts to rupees 665.50 in the 5th year. What is this? First thing is the rate which is given to us, 10% per annum compound interest, right? On a certain sum of money. Krish, what is this certain sum of money? Sir, it's the principal which is not. Which is not given, okay? Amounts to, what amounts to? What is this? What is this? Amount? Yes, sir. No. Of the 5th year. No, no, this is not amount. When you read the word amount, it can be anything. Amounts to or becomes. Amounts to means becomes. So, what is becoming? The compound interest calculated The yearly. compound interest of the 6th year. Exactly, the compound interest amounts to. ठीक है, so compound interest for the 5th year, CI5. CI5 is how much? 665.50. Okay. What do you have to find? Calculate the compound interest for the 6th year. Compound interest for the 6th year at the same rate and same sum. And compound interest for the 4th year, CI4. ठीक है, ये 2 चीज ढूंढनी है. अब देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है. ये इसमें तुम्हें प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं है. हैव दे आस्क्ड यू टू फाइंड द प्रिंसिपल? हैव दे आस्क्ड यू टू फाइंड द प्रिंसिपल? नो. प्रिंसिपल दिया नहीं है तुमको, बट पूछा भी नहीं है. दे हैव नॉट गिवन यू and they have not, neither they have asked you to find it. So don't worry about principle. I will show you the technique where you can find this without principle. So this is a type of a question which is known as the compound interest for the next or the previous year. The compound interest for the next year or the previous year. Okay, how to find that? So very easy. See this. Compound interest for the 6th year. First you have to find this, right? Compound interest for the 6th year is equal to compound interest for the 5th year plus rate क्या है तुम्हारा? जो भी rate है, rate % of
कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 5th ईयर। मैंने क्या किया, मैंने मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट को ले लिया, किसके, 5th ईयर के, उसमें मैंने ऐड किया एक चीज, क्या ऐड किया, R% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 5th ईयर। I added R% of compound interest of the 5th year. Okay, so what is the compound interest for the 6th year? I don't know. See, once again. I will write CI6 is equal to, what is the compound interest for the 5th year? 665.50 plus 10% of 665.50. ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। 665.50 plus 10 upon 100 times 665.50, 0 cut, this will become 665.50 plus 665.5 divided by 10, this will become 66.55, 66.55। बस इसको ऐड कर दो, तुम्हें मिल जाएगा CI6। बताओ ऐड करके। Sir, I got it as 732.50. 05, 732.05, then it is correct, and that is our answer. ठीक है, now the next challenge, we have to find CI4 compound interest for the 4th year. CI4 compound interest for the 4th year. Okay. Now for CI4, remember what is the technique. I will write like this: CI5 is equal to CI4 plus R% of CI4. You see what I did? Always remember, here on the left hand side, the number which you are going to put, or the compound interest which you are going to put, is always of the greater year. Greater year मतलब बाद वाले ईयर का। And here whichever number you are going to put, whichever compound interest you are going to put in this position, is always the compound interest for the previous year, पहले वाले ईयर का। तो 5th year का compound interest will be equal to 4th year का compound interest plus R% of 4th year का compound interest. Do you know the compound interest for 4th year? No. तो उसकी जगह x ले लो। ठीक है, 5th year का तुम्हें पता है कितना है, तो तुम लिखोगे इसको 665.50 is equal to x plus 10% of x. इसको सॉल्व करना है। 665.50 is equal to x plus 10 upon 100 times x. So 665.50 is equal to x plus x by 10. So 665.50 is equal to 10x plus x the whole upon 10. So 665.50 is equal to 11x by 10. ठीक है, 665.50 times 10 divided by 11 is equal to x. Please find the value of x. Sir, I have a doubt. Yes, please. So can't we write as CI4 equals to CI5 minus No. R into CI5? This is Prajakta, right? Yes, sir. Prajakta, in class 8th, I taught you one chapter called percentage. Do you remember? Yes, sir. In percentage chapter, there was a question. Raincoat is cheaper than umbrella by this much percent. How much percent is umbrella costlier than raincoat? Rice is cheaper than wheat by this much percent. How much is wheat costlier than rice? By how many percent? याद है ऐसे क्वेश्चंस थे, और ये जब मैंने सॉल्व किए थे ना, तो मैंने तुम्हें बताया था कि आंसर अलग अलग आता है। अगर राइस वीट से 10% चीपर है, तो वीट राइस से 15% कॉस्टलियर निकलता था।
मतलब वो परसेंटेज ऐसी एक क्वांटिटी है विच इज़ नॉट लीनियर, तो यू कैनॉट जस्ट, तुम्हें पता है एक क्वेश्चन था जिसमें था कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज्ड बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट शुड वी रिड्यूस इट्स प्राइस टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो उसमें हम लोग Yes, sir. हमको सेम आंसर नहीं मिलता था, द आंसर वॉज नॉट 10%। वाई? बिकॉज परसेंटेज इज नॉन लीनियर क्वांटिटी। लीनियर क्वांटिटी मतलब तुम्हारे नॉर्मल नंबर्स, नॉर्मल नंबर्स में क्या होता है, जितना परसेंटेज तुम ऐड करते हो, सॉरी जितना नंबर तुम ऐड करते हो उतना ही नंबर माइनस करने से यू गेट द ओरिजिनल नंबर। डज द सेम थिंग हैपन इन परसेंटेज? नो, सो यू कैनॉट डू दैट। अभी समझ में आया प्राजक्ता? Yes, sir. Yeah, this is the way, stick to it and you'll get the answer. Anyone, the answer is there? Yes, sir. Yes, sir. 605. Yes, sir. Rupees Yes, 605. 605. Very good, everyone has got the answer of rupees 605. That is your compound interest for the 4th year. Compound interest for the 4th year 605. समझ में आया? सिंपल था ये, एप्लीकेशन बेस्ड था क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। One more similar question. One more similar question. Let's do it. A sum of money. A sum of money मतलब principal. दिया है क्या principal? नहीं. At compound interest amounts to rupees 8100 in 5 years. What is this? Can anyone tell me? Open mic. Anyone can Yes, sir. answer. Can I? Yes, please. Sir, it is the amount in the amount at the amount for the 5th year. Very good. A5 it is. It is 8100. Okay. And to rupees 8748 in 6 years. A6 8748. ठीक है. Find the rate percent. Find the rate percent. Find the amount in 7th year. ठीक है. And find the amount in 4th year. ये क्वेश्चन तुम लोग करोगे, सब लोग सॉल्व करोगे तुम लोग, ठीक है. एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सेंड मी योर अटेम्प्ट्स, ओके, so I can judge whether you are on the right track or not, because this is exactly what we have been learning in this class since past 45 minutes. Sir, I'm all sorry, the- 1 hour 15 minutes. Yes, all the questions, everything. You don't have to find principal, okay, in this question also. पहले तो रेट निकालो, सब लोग रेट ढूंढेंगे एंड दे विल सेंड मी. 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के अमाउंट दिए हुए हैं, रेट निकालनी कोई बड़ी बात नहीं है, हमने अभी किया है ये, एंड आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू नो इट. कम ऑन. The rate is 8%. Only Prajakta has sent me
A7 and A4, her answer is absolutely correct. Method is also perfect. What about the others? Okay, Mahant has sent me. Let me check here itself. Perfect, Mahant. Very good. In the same manner, you do the last one also and finish it. I am writing the questions of exercise 2C and 2D, which are to be done as homework from the new textbook also. Okay, so there is no confusion now. I'm just writing the question, homework questions here only. Homework exercise 2C. Okay, in exercise 2C, you do question number 1, 2, 3, 7, 8, 12. These are the questions to be done from exercise 2C, from exercise 2D. Okay, Om has sent me something. Let's see if it is correct or not. Yeah, it is correct. I hope, Om, you have done it yourself. Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ओम तुम्हारा आंसर. इंटरेस्ट ऑन इट फॉर 1 ईयर. छापा है क्या तूने? हाँ, नो सर, मैंने सिर्फ वो देखा वो कैसे लिखा था. बट मैंने तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ना वो कैसे लिखा था. उधर देखने की ज़रूरत नहीं है ना फिर. यस सर. ओके, फ्रॉम एक्सरसाइज 2D. अभी तक धानी ने मुझे कुछ भी नहीं भेजा है. Doing the last solved example. बेटा, देर इज़ नो टाइम. यू सी इट्स 5:29. I want to do everything 100% for you, but I also have to respect the time constraint, right? And it is very easy question. Okay, what I can do is you do the homework properly. Whatever you doubt you have in the homework, I will help you out with that. Okay. Sir, we have to send the homework till tomorrow. No, next week. Okay, sir. Okay, I know it's your revision test going on and I will not force you to send homework early. Okay, but do it next week. Submit next week anyhow. Okay, from exercise 2D, question number 2, question number 5, question number 6, question number 7, and question number 9. That's it. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 questions. ठीक है, इतना कर सकते हो तुम लोग. Okay, sir. ओके, नेक्स्ट वीक सबमिट करना है, कल नहीं करना है.
नेक्स्ट वीक व्हेन यू सबमिट वॉट एवर डाउट यू हैव आई एम गोइंग टू सॉल्व। ओके, उसके बाद ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा। मेरे लिए और कुछ भी सिखाना बचता नहीं है इसमें। आई हैव टॉट यू वॉट एवर टेक्निक्स, सब कुछ मैंने तुमसे डिस्कस किया है। नाउ आई एम फ्री टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। बट इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दीज एग्जाम्पल्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2C और 2D, द क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन ओवर हियर, अगर तुम्हें इसमें कुछ डाउट है तो मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। Okay, sir. Also this week I am not taking any test due to your revision test, so don't worry about it. I can support you as much as I can, but उसके बाद revision test खत्म होने के बाद next week से everything will go back to usual. Do you understand? Yes, sir. Okay.